A very good evening to everybody. 10 o'clock, and I'm there with more IELTS tips on a daily basis. So today, our lecture is going to be based on writing and how to structure your writing. What should be the ingredients of writing? How to make the writing more presentable. Before starting this lecture, let me wish everybody who have come to attend the lecture a very good evening, Mr. Vaibhav, and very good evening to everybody else. So let us start with our work. If I talk about the writing section, this is the least scoring section. Least scoring. Least scoring का मतलब है इसमें हमेशा कम बैंड्स आते हैं और कम बैंड्स आने का रीजन है बहुत स्ट्रॉन्ग. क्या रीजन है हम डिस्कस करेंगे आज. We'll discuss that in detail. What is the reason why the bands are less in IELTS writing? I'm not talking of Weber's, I'm talking of global. If I talk globally, and if we look at the results globally, IELTS की writing जो है, that is the least section, जिसमें सबसे कम मार्क्स आते हैं writing में. ऐसा क्यों है? देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर. So बिना time waste किए हुए, let us start with the session so we can understand what things are going wrong. If you haven't followed us on social media, follow us this YouTube channel, which is very useful. It will be very helpful because every day 10 o'clock, I'm there with new tips, blog, Instagram, Facebook, Telegram. So these are some of the channels that I want you to follow. A lot of material, lot of stuff is being given here. आज हम बात करेंगे हमारे गुरुग्राम सेंटर की यानी कि गुड़गांव सेंटर की जो सेक्टर 14 में है. This is the beautiful building of our center and this is the auditorium which we have. We have an inbuilt auditorium in the center. Weber's Gurugram is a very different center. It is close to MG Road Metro Station and Gurgaon bus stand. It has got the best infrastructure in the city. In-house auditorium for events और हर एक हफ्ते इवेंट होता है कोई ना कोई. कॉन्फिडेंस बूस्टर क्लासेस आती हैं जहां पे इवेंट्स हम करते हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, which makes a lot of difference in your English speaking. Experienced and well-trained faculty, very small batch sizes because in Gurgaon we've got a batch size which is typically like maximum 5. Personalized classes, all modules are covered on a daily basis, excellent results of Gurgaon Center. And we have got free study abroad counseling for every subject. To book a free demo, call this number. Now, what is writing? If I talk about the writing के दो parts हैं. Part 1, that is called as task 1, and part 2, that is called as task 2. अब ये फर्क क्या है दोनों में? दोनों में ये फर्क है, जो हमारा task 1 है, that is very descriptive in nature. Descriptive का मतलब है आपको एक ग्राफ दिया है, आपने उसे डिस्क्राइब करना है. 20 मिनट का टाइम है. टाइम इज नो कंसिडरेशन हियर बिकॉज द टोटल टाइम इज 60 मिनट्स. So you can bifurcate your time. You can make it 15 minutes and 45 minutes also. That is not a problem. That is not an issue. But generally, this is the recommended time that you should take 20 minutes on this task. You have to describe a picture or write a letter. कुछ भी फोटोग्राफ डिस्क्राइब करनी है, कोई ग्राफ डिस्क्राइब करना है, या आपने लेटर लिखनी है. पिक्चर होता है एकेडमिक में एंड राइटिंग अ लेटर होता है जनरल में. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ एकेडमिक एंड जनरल. सो अगर हम आगे चलें तो वील टॉक अबाउट एनालिटिकल. एनालिटिकल मतलब हमें इसे एनालाइज करना है. प्रॉब्लम दिया है, वी हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम. इट टेक्स 40 minutes to do it. It's recommended. It is not a compulsion that you have to take 40 minutes. It's a recommended thing, 40 minutes. On common issues, day-to-day issues, some issue is given and we have to analyze it. So let us understand what are the parameters of writing. हमारा writing check होती कैसे है? देखो एग्जामिनर क्या देख रहा है. आपने उसे ये पेज दिया एक राइटिंग का, लिख के एक पेज दे दिया राइटिंग का. अब ये राइटिंग का पेज उसने चेक करना है. वो चेक करने में क्या देखेगा? What will he see? So if you see logically, the first thing he's going to see is your grammar. Definitely. The second thing that he's going to check is your vocabulary.
ग्रामर और वोकैबुलरी अलग अलग चीजें हैं। एक साइड पे आपके स्पेलिंग्स चेक हो रहे हैं, एक साइड पे आपकी ग्रामर चेक हो रही है। थर्ड थिंग इज गोइंग टू चेक, क्या आपने क्वेश्चन का आंसर दिया है कि नहीं दिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने टास्क का रिस्पॉन्स क्या दिया है, आपको एक टास्क दिया गया, आपने उसको क्या रिस्पॉन्स दिया, दिस इज द थर्ड थिंग दैट इज गोइंग टू चेक। फोर्थ थिंग इज गोइंग टू चेक, जो आपने रिस्पॉन्स दिया है बिखरा हुआ तो नहीं है, इट इज लाइक अ जस्ट सेंटेंसेस, एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया, ऐसा तो नहीं है। They have to be connected together so that a proper reasoning is done. So ये चार चीजें चेक होती हैं। इनके ना नाम दिए हुए इन्होंने, बड़े अजीब से नाम है, नाम फिगर आउट करते हैं, what are the names which are given here. So let us see the names that are given here. In task 1 it is called as task achievement, जो आपको टास्क दिए आपने उसे अचीव किया कि नहीं किया। कोहेरेंस एंड कोहेजन का मतलब हो गया लिंकिंग। लेक्सिकल रिसोर्स का मतलब हो गया वोकैबुलरी, और ग्रामर का मतलब तो आप जानते हैं, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। अगर मैं टास्क 2 की बात करूं तो सब चीजें सेम है। टास्क अचीवमेंट की जगह पे टास्क रिस्पॉन्स है। There is coherence and cohesion, there is lexical resource, and there's grammatical range and accuracy. All the three remain same, and one thing is changed. That is in task 1 and task 2. Task achievement, task response, बात तो same ही है. How are you responding to it? How are you responding to the question? So these are the four things that are checked. And one thing is name is different. So basically 5 चीजें हो गई, 4 एक में, 4 एक में, 3 चीजें कॉमन है एक में, 3 चीजें कॉमन है दूसरे में। सो लेट अस सी टास्क अचीवमेंट होता क्या है। ये ना बहुत समझ लीजिए डिटेल में, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड दिस यू विल बी एबल टू फिगर आउट हाउ टू डू इट। द फर्स्ट थिंग इज, टास्क अचीवमेंट में क्या आपने एक ओवरव्यू दिया है, टास्क किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपने अपने कंटेंट की डिटेल्स दी हैं, की फीचर्स दी हैं, जो मेन फीचर्स आपसे पूछे गए हैं बताने के लिए, क्या आपने एक्सप्लेन किया है, डिड यू कंपेयर एनीथिंग और नॉट। 150 से 170 वर्ड्स के बीच में लिखना है, डिड यू राइट दैट और नॉट, इज योर आंसर लेजिबल और नॉट लेजिबल। बाय लेजिबल आई मीन टू से कैन एनीबडी रीड दिस और नोबडी कैन रीड इट, दैट इज कॉल्ड एज टास्क 1। सेम इज द केस विद टास्क 2, बट टास्क 2 करने से पहले हम ना बाइफरकेट कर लेते हैं अपने आप को। देखिए आईएलटीएस 2 प्रकार का होता है, एकेडमिक एंड जनरल। एकेडमिक इज फॉर स्टडी बेसिस एंड जनरल इज फॉर इमिग्रेशन बेसिस। एकेडमिक पीपल गेट अ रिपोर्ट टू राइट एंड जनरल पीपल गेट अ लेटर टू राइट। तो अब इन दोनों टास्क में हम फर्क देखते हैं कि टास्क अचीवमेंट एकेडमिक के लिए एंड टास्क अचीवमेंट जनरल के लिए फर्क कैसे है। These are technicalities that you should understand, which is very important. अब आपने इंप्रूव करना है एकेडमिक को, तो देखते हैं इंप्रूव कैसे करते हैं। द नंबर 1 मिस्टेक पीपल डू हियर इज वो इनकरेक्ट एनालिसिस कर देते हैं। कुछ ग्रोथ हो रही है उसको वो ठीक नहीं लिखते, कुछ फॉल हो रही है उसको वो ठीक नहीं लिखते, दे डू इनकरेक्ट एनालिसिस। सेकेंड थिंग इज वो हर एक डिटेल लिख देते हैं, एवरी डिटेल। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये ग्राफ है एंड यहां पे दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर, तो वो हर चीज एक्सप्लेन कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। They'll keep on explaining every petty detail, which is not a good idea. Which is not a good idea. If you report everything, the number of words are going to increase a lot. You will make more mistakes and you will lose marks. So we should not report every detail. Next thing that is there is compare नहीं ज्यादा किया आपने. You are not comparing enough. For example, अगर men and women के बीच में कोई चीज दी हुई है, the consumption of some particular goods for men and some same goods for women, are you comparing them or not? If you're not comparing them, you'll not get the good result. Now let us see example 1. Bad example किसे बोलते हैं, इसे ध्यान से पढ़ेंगे हम। Bad example क्या है, फिर से गुड करेंगे। 100,000 men went to university in 2002. 200,000 women went to university in 2002. Now, this is so similar. You are not going to get marks for it. Remember, this is an English paper, not a mathematics paper. Let us see a good example. Same चीज का good example देखते हैं।
A total of 200,000 women went in 2002, surpassing the number of men attending the same year by exactly 100,000. So now मैंने comparative study भी कर दी, दोनों को compare भी कर दिया कि 100,000 ज्यादा हैं उसके, women ज्यादा हैं, men कम हैं. So I've talked about that, and I have also talked about उन्होंने उसे surpass कर दिया in 2002. This is a very good analysis, very good example. Keep that in mind. This is how you compare. ऊपर सिर्फ हमने डिस्क्राइब किया है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां हमने सिर्फ डिस्क्राइब किया है. आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग इट हियर. मैंने इसे डिस्क्राइब किया है, विच इज ओके, यू विल गेट मार्क्स बट नॉट मोर देन 5 or 6. आई एम नॉट कंपेयरिंग इट, इनफ कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं. यहां पे मैंने इसे कंपेयर किया है. इफ आई कंपेयर, it becomes much better as compared to only describe. So comparison is extremely important. Keep that into mind. Comparison बहुत जरूरी है. अब चलते हैं जनरल टास्क पे. अंडरस्टैंड करेंगे जनरल टास्क में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं and how we go to handle general task. Number 1, incorrect tone. Tone क्या होती है? For example, you are writing a letter to your friend. Your tone has to be informal. You are writing a letter to your boss. Your tone has to be formal. So both the cases, the tone is going to be different. And if you interchange the tone, अपने friend को आपने formal लिख दिया, boss को आपने informal लिख दिया, तो marks तो कटेंगे. That is for sure. Mistake number 2. हर एक letter में 3 या 4 points दिए होते हैं. So make it sure you answer those points in the sequence that they're asking. Mostly 3 points होते हैं. Answer them in the sequence that they're asking. Every prompt has, उसको prompt बोलते हैं. Every question या every prompt has to be answered. Not making right paragraphs. Every prompt should be in a different paragraph, so you answer it completely. If you don't make the right paragraph, just write one single letter, you will not be getting marks. A bad example देखते हैं. Hey dude, I need half a holiday. Mom and dad are coming over. Want to pick them up and settle them. Now, this is a very friendly talk, very informal, full of slang words, which is not a good idea. ये informal भी नहीं है, ये उससे भी घटिया है. Let us see a good example with the same thing. Dear sir, ये letter है छुट्टी के लिए. Dear sir, my father and mother are arriving tomorrow morning. As there is no one to pick them up, I would require a half-day leave. This is much better, more formal, more organized. The tone is perfect. So this is the kind of thing that the examiner is expecting. And if you don't give the kind of thing that the examiner is expecting, things are going to go wrong. Let us go to next one, task response. अब task response आता है task 2 में. इसका भी concept same ही है. Have you covered all the parts? Suppose आपको बोला गया write down the advantages and disadvantages and आप सिर्फ advantage लिखाते हैं. Not a good idea. Second point is clarity in points. Are your points clear enough? कंफ्यूजन तो नहीं है, क्लियर कट आपने आंसर दिए, एग्जाम्पल्स दिए आपने, 250 to 270 वर्ड्स लिखे हैं आपने, लेजिबल का मतलब है पढ़ने योग्य है कि नहीं. सो दीज आर द टास्क रिस्पॉन्सेज फॉर टास्क 2. लेट अस सी हाउ टू इंप्रूव एन एसे. नंबर 1, एड्रेस ऑल द पार्ट्स ऑफ द टास्क. जितना भी आपका टास्क है, जो चीजें लिखी हुई हैं, हर पॉइंट को एड्रेस करो. Second, present a fully developed position and answer to the question with relevant, fully extended and well supported ideas. अगर आप एक आइडिया देते हो, उसको सपोर्ट करो. सपोर्ट करते हो तो प्रॉपरली सपोर्ट करो. आधी सपोर्ट मत करो कोई चीज को, प्रॉपरली सपोर्ट करो. I will teach you how to do it. Next thing is not writing below 260 words and above 280 words. If you write it above 280, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे, ज्यादा गलतियां करोगे. If you write it below 260, it is not going to be sufficient. The examiner is not going to mark you. Follow a structured approach. Structure बनाना बहुत जरूरी है. If you look at my previous videos, you will see I have made a lot of structures. कैसे intro बनानी है, कैसे body बनानी है, कैसे conclusion बनाना है. Follow the structured approach. Nothing will go wrong. Next, intro में paraphrase and thesis डालना है. Body para 1 में main reason, support and example. Body para 2 में main reason, support and example. Conclusion में आपका क्या आएगा? Last para. This is a structured approach.
अब आ गई नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब है जो आपका टॉपिक है, दिस टॉपिक विच इज द टॉपिक क्वेश्चन इज गिवन हियर, इंट्रो से कनेक्टेड है, बॉडी पैरा 1 से कनेक्टेड है, बॉडी पैरा 2 से कनेक्टेड है, एंड कंक्लूजन से कनेक्टेड है। तो क्या ये आपस में भी कनेक्टेड हैं? आर दे कनेक्टेड टू ईच अदर ऑल्सो? वेल, इफ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर ऑल्सो एंड दे कनेक्टेड टू द टॉपिक, योर कोहेरेंस इज फाइन, आपकी कोहेरेंस में प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज है हमारी कोहीजन। कोहीजन क्या होती है? व्हाट इज कोहीजन? कोहीजन का मतलब है सेंटेंसेस की इंटरकनेक्टिविटी। सेंटेंसेस आपस में जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए, दैट इज कॉल्ड एज कोहीजन। Our next step is called how to improve coherence and cohesion. Number 1, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है relevant connectors को यूज करो। अगर connectors नहीं यूज करते, मार्क्स नहीं आते आपके। Don't write unnecessary information. फालतू की इंफॉर्मेशन मत लिखो। जितनी जरूरत है, whatever is required, write that much only. Link the ideas together, which is very important. The whole writing should have a theme. If it doesn't have a theme, it is not possible for the examiner to understand what you are writing. Lexical resource. देखते हैं what is lexical resource. Range of vocabulary, spellings, collocation, word formation, phrases and idioms. These all come under lexical resource. अब आपने improvement लेके आनी है। Improvement कैसे लेके आएंगे वो देखते हैं। Use relevant words, not big words. If you can use simple language to explain, do not complicate it. Use idioms and phrases if you can. मैं तो suggest करता हूँ, please आप ना generally speaking idioms को निकाल दीजिए. Use phrases if you can. Don't use idioms. If you use idioms, use करने आते नहीं, informal idioms होते हैं, कई formal idioms होते हैं, and we mess up the whole thing. So use phrases if you can. Some good phrases आपके पास हैं तो वो use कर लीजिए. अब आ गया grammatical range and accuracy, sentence structure, tenses and punctuation. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें आती है इसको ठीक करने में, क्योंकि जो इंसान बचपन से ही गलत ग्रामर लिख रहा हो, इफ यू आर राइटिंग रॉन्ग ग्रामर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, it is impossible to correct the grammar in 2 days. It is not possible. It's a huge uphill task. You cannot cover that in 2 days. Even you have to remember that well, we can teach you grammar, but can you implement that grammar? That is not possible. So my suggestion would always be, if you have bad grammar, keep on writing down, keep on getting it checked, write down, check, and take out grammatical mistakes. Only then it is possible. Then understand the concept of grammar. ये मैंने गलती क्यों करी? Next time मेरी गलती नहीं होगी. Only then the grammar becomes better. Otherwise grammar ठीक नहीं होती. Punctuation, comma, full stop डालना कहाँ है? अब प्रॉब्लम देखो यहाँ पे क्या आती है. अब कुछ लोगों को ना comma and full stop समझ नहीं आता और वो क्या करते हैं, सेमीकोलन, कोलन यूज करने की कोशिश करी जाते हैं, जबकि उनको पता ही नहीं बेसिक यूज कैसे करना है. फुल स्टॉप एंड कॉमा, दे आर नॉट क्लियर हाउ टू यूज देम एंड दे स्टार्ट यूजिंग दिस सेमीकोलन एंड दे स्टार्ट यूजिंग दिस कोलन. Another problem. So please don't complicate yourself. Don't go to class 10 if you don't know how to cross class 1. Use comma, full stop. That's good enough. That is good enough. Don't complicate your essay in case you don't know how to use it. In case you know how to use it, definitely use it. But if you don't know how to use it, please don't play with them. Next देखते हैं. How to improve GRA. Number 1. सबसे पहले काम कीजिए अपनी सेंटेंस की लेंथ के ऊपर. सेंटेंस की लेंथ का मतलब क्या है? People write a long sentence, na full stop, na comma. They keep on writing. Examiner gets very confused. लिखा क्या हुआ? Work on your punctuation, full stop and comma. Work on your tenses. ये 3 चीजों पे काम कीजिए. अब sentences की बात करते हैं. How long should a sentence be? Minimum 7 words, maximum 15 to 20 words. This is extremely important. Why is it important? Because अगर आपकी minimum sentence 7 से कम होगा तो it will become a very small sentence, which is not a good idea. And if it is more than 20 words, the examiner will not be able to understand. लिखा क्या हुआ है? Let us read one. ये 39 words का sentence है. Okay?
The government can now better understand the potential location and impact of where the biggest earthquakes occur within a 1.5 million square kilometer area, and is using the information to assess and prioritize seismic upgrades at its facilities. A very long sentence, no comma at all inside the sentence. Examiner is going to get देखो examiner एक इंसान है, he's a human being. If you write these long sentences, by the time वो यहाँ पे पहुंचेगा ना, he will forget this. He is going to forget this. What are you writing? He will forget the topic only. What are you writing? Only you can understand such sentences. Nobody else can understand. Make it sure you divide the sentence into two parts. So मैंने इसके दो parts कर दिए, एक 25 word का, एक 14 word का. The government can now better understand the potential location and impact of where the biggest earthquake occurs within a 1.5 square kilometer area. ये भी लंबा है. Even shorter than this will be better. It is using the information to assess and prioritize seismic upgrades at its facilities. Much easy to understand. Otherwise, it becomes very difficult for us to understand क्या लिखा है. Okay, now I'm going to show you something and you are going to give me a band score. Shopping online has become more popular than shopping at a regular shopping center. Is this a positive or a negative development? ठीक है, तो मैंने 3 introductions बना के लिखी हैं. You are going to check and give me the band score. इसकी band score कितनी आएगी? Okay? तो पहली इंट्रोडक्शन ये आ गई. इसे पढ़िए, इसे रीड कीजिए. इसमें बहुत गलतियां हैं. There is going to be grammatical error, there is going to be spelling error, there is going to be logic. Everything will be missing. Figure it out. मेरे को सिर्फ आपने एक काम करना है. Write down in the chat box what is the band score that you will give to this person. Read it word by word, read it word by word, and give me a band score. Give me a band score for this person. Let me see how many people get close to it. I'll give you about half a minute. Calculate the band score and write it down. Okay. So now let us understand this कि इसकी score कितनी है. ठीक है? So I'm going to show it to you. What is the score going to be? So I am going to give this score out of a 9 band. Out of a 9 band. Fine. So we will be giving a score of 4 here out of 9. Now you will ask me, sir, इतने high score क्यों दिया आपने? देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसके ना कुछ एरियाज में प्रॉब्लम है. फॉर एग्जाम्पल, nowadays many people will be by ग्रामर में गलती हो गई. थिंक इन ऑनलाइन, ग्रामर में गलती चल रही है. फॉर सम पीपल इज कन्वीनियंस, ये लेक्सिकल रिसोर्स में गलती हो गई. सो लेक्सिकल रिसोर्स एंड ग्रामर, दो गलतियां निकल रही हैं बाहर. GRA एंड लेक्सिकल रिसोर्स also might be cheaper than shopping center. This essay will be grammar में गलती, discuss spelling की गलती. The number of people shopping की गलती online today, and there is advantages or disadvantages. अब there is word समझ नहीं आ रहा. Now look at these mistakes, but structure है नीचे. It is not like it is not understandable. You still can understand it. The understanding is still there, but marks will not be more than 4 under any circumstances. So this is the problem with this kind of a sample. Now let us read another kind of a sample. I am teaching you this so that you understand grammar की गलतियां ढूंढते कैसे हैं, spelling की गलतियां कैसे ढूंढते हैं, आपने अपनी गलतियां कैसे ठीक करनी है. So all this. This is a 4 band score. Let us read another one. Now read this and mark. Give me reason also. Why are you giving that marks? Read it.
All right. So we have to give the marks out of 9. Okay. We are just giving marks out of 9. Doesn't matter कैसे इसकी bifurcation है. I'll tell it to you later on. But I'm just giving you marks out of 9 right now. So let us read it out first. Around the world. Marks out of 9. Around the world, shopping online has become a normal activity for many people. Some feel that this tendency may seriously affect the local retail shops, while others are enjoying the benefit of shopping from the comfort of their homes. I think shopping on the internet is a positive option, especially for those with an illness, disability, and those who are very busy normally working. So now, if I talk about the band score, it is 7 band score. 7 out of 9. I'm telling you out of 9 only because हमारे mind में 9 का एक figure setup हुआ हुआ है. So मैं उसी में से आपको marks दे रहा हूँ. So this is 7 out of 9. Now, why is it not 8 or 9? Well, better vocabulary can be added, better ideas can be added, then it will keep on getting polished upwards. So let us go further. Now read this and give a band score. Read this and give a band score. Again, give the marks out of 9. Don't give the marks out of 5 or 3. Give the marks out of 9. Give marks out of 9. Okay, so now let us read this and find out the mistakes. Nowadays, the topic about online shopping are being discussed. Topic hai to is being discussed aayega around the world. Some feel it is the best way to buy products while others disagree. In my opinion, online shopping has more benefits than negatives. इसने paraphrasing ठीक से नहीं करी है, but इसकी बात समझ में आ रही है बहुत अच्छी तरह से. Spellings में भी गलतियां नहीं है. Out of 9 इसके marks देंगे. So the marks out of 9 are 6 bands. Perfectly fine. Rocky Sena, absolutely perfectly fine. The marks are 6 bands out of 9. Now you have to understand this. If you write this kind of an introduction or this kind of an essay, you're going to get 6, right? If you write more complicated, you're going to get 7. If you write even better than that, it depends on your thought process. How are you writing? What things are you feeding inside? Whatever you will feed inside, the result will come out that way. So let us understand this once again and figure out आपको marks मिलते कैसे? How do you get marks? Now read this concept very clearly. If for a layman's language, जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं task response क्या, task achievement क्या है, क्या lexical resources क्या है, you are not bothered. A person who's giving the exam for the first time, he's not bothered with what is happening. So what should he consider into mind? उसको एक ही चीज कंसिडर करनी चाहिए. क्या मैंने आंसर दिया? क्या मैंने अच्छा आंसर दिया? क्या ये एग्जामिनर को समझ आएगा? You are not going to the examination hall with him. He's alone there. He's checking your work alone. उसको समझ आपकी बात आ रही है कि नहीं आ रही? अगर आपकी बात उसको समझ में नहीं आती, वो मार्क्स नहीं देगा. Like that 4 band score, हमें समझ नहीं आ रही थी वो कर क्या रहा है, स्पेलिंग्स कहां जा रहे हैं, ग्रामर कहां जा रही है, क्या हो रहा है, हमें क्लियर नहीं हो रहा था उसका. 7 वाले का क्लैरिटी थी, 6 वाले की क्लैरिटी थी, बट वो उसमें शार्पनेस नहीं थी. So this is the way it is banded. Now this is a very complicated process. Don't even expect it to understand in one small lecture that you are going to get a perfect band score. But if I look at the people who are answering this, a lot of people got it right. Let us see how many people got it right. पहले वाले में you gave very less band scores, like 1 or 2. 1 or 2 पता है किसमें होती हैं? जो कुछ words लिखे हुए हैं, खाली कुछ words हैं, उनका कोई meaning नहीं है, कोई sense नहीं है, कोई sentence structure नहीं है, उसको हम 1 band देते हैं.
2 बैंड होता है, थोड़ी फ्रेजेस लिखी हुई है, 3 बैंड्स होता है, थोड़े सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, पर उनके आपस में सेंस नहीं बन रही। 4 बैंड होता है, सेंटेंसेस होते हैं बट समझ नहीं आते, स्पेलिंग्स में गलतियां बहुत है, ग्रामर में गलतियां, जो देखा हमने अभी। 5 बैंड उसे थोड़ा बेटर होता है। धीरे धीरे करके स्टेप्स बने हुए हैं, स्टेप्स बने हुए हैं। आप किस स्टेप पे लैंड करते हो, दैट इज द क्वेश्चन, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कितनी अच्छी है। सो पहले वाले में काफी लोगों ने गलत डाला, रजत रामपाल का ठीक है, 4 आउट ऑफ 9 उसने दिए हैं। सेकेंड वाले में आपने आउट ऑफ 6 की बैंडिंग करी थी, तो काफी लोगों का ठीक हुआ है, उसमें दे आर गिविंग अ स्कोर ऑफ 7 आउट ऑफ 9। इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड वाले में काफी लोगों ने सही किए हैं, काफी लोगों ने सही किए हैं। सो लेट अस डू अ recap of this lecture, a small recap of this lecture, because this lecture is a very very important lecture, making you understand बैंड्स अपने बढ़ाने कैसे हैं, how to increase the band score। तो मैं फटाफट एक ऊपर से आपको लेक्चर का दोबारा से आइडिया देने वाला हूं। तो ये तो हो गया जी हमारा गुड़गांव का। टास्क 1 डिस्क्रिप्टिव होता है, टास्क 2 एनालिटिकल होता है। एनालिटिकल मतलब एनालाइज करना होता है हमें। टास्क 1 में ये 4 चीजें चेक होती हैं, टास्क 2 में ये 4 चीजें चेक होती हैं। 4 चीजें हैं क्या? टास्क पूरा किया, जो लिखा है उसकी सेंस बन रही है, वोकैबुलरी अच्छी है, ग्रामर अच्छी है, बस। नेक्स्ट, टास्क अचीवमेंट क्या है? आपने जो दिया है अंदर उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, मेन चीजें एक्सप्लेन करी हैं कि नहीं करी, कंपैरिजंस किए हैं कि नहीं किए, ये टास्क अचीवमेंट में आ गया। 150 से 170 वर्ड लिखने, राइटिंग आपकी सुंदर होनी चाहिए। इंप्रूविंग एकेडमिक में एनालिसिस ठीक करो, सारी चीजें नहीं बतानी, मेन चीजें बताओ। कंपैरिजन करना जरूरी है, जैसे मैंने लिखा है गुड एंड बैड को, उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जनरल के केस में क्या होता है, सारे प्रॉम्प्ट्स को आंसर करो, टोन आपकी करेक्ट होनी चाहिए, इनफॉर्मल है कि फॉर्मल है वो करेक्ट होनी चाहिए आपकी टोन। पैराग्राफ्स के लिए जितने प्रॉम्प्ट्स आपको दिए सबको सेपरेट पैरा में समझाइए। गुड एंड बैड के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। टास्क रिस्पॉन्स ऐसे में क्या होता है, सारी चीजें आपने कवर करी कि नहीं करी, क्लैरिटी आपको पॉइंट्स में थी या आप खुद भी कंफ्यूज थे मैंने क्या करना है। एग्जाम्पल्स दिए, 250 से 270 वर्ड लिखे, लॉजिकल लेजिबल है या नहीं, ऐसे की इंप्रूवमेंट कैसे लेके आनी है, बड़ा सिंपल है, सारी चीजों को अटेम्प्ट करो, अपनी पोजीशन को क्लियरली एक्सप्लेन करो, कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज मत करो। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जामिनर सुपर कंफ्यूज हो जाएगा। 260 से कम एंड 280 से ज्यादा वर्ड्स मत लिखिए। स्ट्रक्चर्ड पैटर्न अप्रोच फॉलो कीजिए, जैसे कि इंट्रोडक्शन, बॉडी पैरा 1, बॉडी पैरा 2 एंड कंक्लूजन प्रॉपरली लिखिए। कोहेरेंस मतलब लिंकिंग होनी चाहिए, कोहीजन मतलब सेंटेंसेस में लिंकिंग होनी चाहिए। कैसे इंप्रूव करना है, कनेक्टर्स यूज करो, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन मत डालो, एमी फालतू में जगह मत भरो, it won't make sense. Link your ideas together, which is very important. Everything should have a theme. That is extremely important. If I talk about vocabulary, अच्छी vocabulary, spellings, word formation and phrases डालिए। idiom को छोड़ दीजिए, idiom मत डालिए। Improve lexical resource, relevant words, ज्यादा बड़े word मत डालो। Simple language में explain कर सकते हो, complicate मत करो उससे। phrases डालो अगर आप यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते तो अच्छे अच्छे phrases डालने की जरूरत भी नहीं होती। ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को ठीक करो, टेंसेस को और पंक्चुएशन को ठीक करो। अपनी सेंटेंस लेंथ पे काम करो, ज्यादा लंबे ज्यादा छोटे सेंटेंस मत बनाइए। पंक्चुएशन पे काम कीजिए, टेंसेस पे काम कीजिए। 7 वर्ड मिनिमम, 20 वर्ड मैक्सिमम। ये सेंटेंस को मैंने आपको ब्रेकअप करना सिखाया, किस तरह से हम सेंटेंस को ब्रेकअप करके तोड़ के नया बना सकते हैं, छोटा सेंटेंस बना सकते हैं। फिर हमने 3 इंट्रोडक्शंस देखी, 4 बैंड की, 7 बैंड की और 6 बैंड की। इसके साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम होता है खत्म। अगर आपने हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर लीजिए। हमारा ब्लॉग है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, इन चैनल्स को फॉलो कीजिए। यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस इज आवर गुरुग्राम ब्रांच, व्हिच इज द मोस्ट स्वैंकिएस्ट ब्रांच इन गुरुग्राम for teaching any kind of international examinations. The things that we do here, it is very close to MG metro station, Gurgaon bus stand, best infrastructure of the city, in-house auditorium for events. Events हम हर हफ्ते हैंडल करते हैं यहाँ पे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के। एक्सपीरियंस एंड वेल ट्रेन फैकल्टी है। छोटा बैच साइज है, 5 का होता है।
पर्सनलाइज्ड क्लासेस हैं, सारे मॉड्यूल्स को रोज कवर करते हैं, ग्रेट रिजल्ट्स हैं, एंड इसमें आपको फ्री वीजा काउंसलिंग भी मिलती है गुरुग्राम के अंदर। डेमो बुक करने के लिए इस नंबर पे कॉल करें। इसके साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे स्पीकिंग का कुछ करने के लिए। सो आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग अबाउट स्पीकिंग, ऑलराइट? सो we'll take another type of a cue card and we'll figure it out. पहले मैंने पर्सन बेस्ड, ऑब्जेक्ट बेस्ड क्यू कार्ड्स करवाए हुए। आई एम गोइंग टू टीच वन मोर टाइप ऑफ क्यू कार्ड टुमारो। See you tomorrow, 10 o'clock exactly. Thank you so much. Good night.